Hello everyone. Today we are going to study chapter 1 of class 10th. The name of chapter is chemical reaction and equations. ओके, तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं क्लास 9th में या माइट भी क्लास 8 में। इसके डिटेल्स में आपने पढ़ा होगा। इस फर्स्ट चैप्टर में जो क्लास 10th का इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शंस एग्जैक्ट होते क्या है, इनके इक्वेशंस क्या होते हैं और इनको किस तरह लिखते हैं और ये क्यों रिक्वायर्ड है केमिकल इक्वेशंस वगैरह लिखना। ओके, सो केमिस्ट्री इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू लेबोरेटरीज, ये तो हमको पता ही है। इट इज डीपली कनेक्टेड टू आवर डे टू डे लाइफ, फ्रॉम द फूड्स वी ईट टू द एयर वी ब्रीथ. Countless changes are constantly taking place around us. Many of these changes involves transformation of substance into entire new substance. Okay, सो क्या हो रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कौन ट्रांसफॉर्म हो रहा है? देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। किसका हो रहा है? किसी एक सब्सटेंस का इनटू अ न्यूली न्यू सब्सटेंस। लाइक ये एक सब्सटेंस है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसी दूसरे न्यूली सब्सटेंस में। ओके ओके, विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये कहाँ पे हो रहे? डे टू डे लाइफ में, एक्टिविटीज में। Such transformations are known as chemical reaction. So this is the basic definition of chemical reaction in normal terminology. What does that means? If transformation, okay, note it down. Transformations of transformation of what? Transformation of substance into new substance. New substance. And one thing we need to highlight or remember is the property might be different. Okay, if the previous substance is having some properties, so the newly created substance may have the different properties. So such kind of transformations are known as chemical reactions. Note it down. I will highlight the definition. Okay, so it will be easy for you to note it down what is the important one. Changes, countless changes taking places around us. These changes involves transformation of substance into entirely new substance with different properties. Such transformations are known as chemical reaction. Okay, so countless changes taking place around us. These changes involves the transformation of substance into entirely new substance with different properties. Such transformations as called as chemical reaction. Okay, so the definition was what we can say. It's a not not a standard definition. It was a generic kind of definition. So for exam purpose, we should know what should be the standard definition of chemical reaction. So the chemical reaction is a process. What it is? It is a process in which one or more substance called reactants. Okay, so I will just try to, what we can say, I will try to pin down the keywords.
Okay, reactants. Okay, so one or two substance here, it can be A plus B, and this A plus B are reactants. Okay, undergo a chemical changes to form a new substance called product. Okay, so this will goes to the, what we can do, it goes under chemical changes and it will form a new product. Okay, it will form a new product. Okay, and what it is called, it will called, this will be the new product. Okay, so this will called reactants and this will be called product, and the new product will be having the different compositions and properties. Okay, so note it down this also, this is very important for the exams, this definition. A chemical reactions, from here, start from here. A chemical reaction is a process in which one or more substance called reactants undergoes a chemical changes to form a new substance called product with different compositions and properties. This process involves breaking of a old chemical bonds, okay, and formation of a new bond. This is very important point. So up to here, it's a definition of a standard chemical reaction, and this is what we can say. It is the root. What is the process going in the chemical reaction? Like it will break the old chemical bond and form a new bond. So this is the process. Okay, note it down some examples also. First, note it down this definition. Then this key points. This one is very important. Like this process involves breaking of an old chemical bond and it will form the new bond. Okay. I will explain you in details in the further chapter. Okay, don't worry. This is just the introduction part of the chapter. So no need to worry what should be the chemical bond, what is this new bond and how it will form, what is this reactant, what is this compositions. So I will explain you in details in the upcoming topics. Don't worry. Okay. So example, what this is a day-to-day life example. When a milk is left at room temperature during summer, it turn into the sour. Okay. So if we left the milk, okay, at the room temperature, so what should be the room temperature? Everyone knows it's a 24 degrees Celsius. 24 degrees is the room temperature. So during the summer, the temperature might get higher, it will goes up to the 32 degree in some cases. Okay, or sometime it go beyond the 32 also, 34 degree. So during the summer, if we are not keeping the milk in the refrigerator, okay, the important point is the milk is not in the refrigerator. Okay, मिल्क कहाँ पे नहीं है, मिल्क रेफ्रिजरेटर के अंदर नहीं रखा हुआ है, मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर, मिल्क को कहाँ छोड़ दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर के ऊपर ही छोड़ दिया हुआ है। ओके, समर में तो अगर ऐसा हमने मिल्क को बाहर समर में छोड़ दिया है 24 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर्स पे, तो वो क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाता है। ओके, और यहाँ पे ये तुमको प्रोसेस समझाया है कि यहाँ पे ये मिल्क है, फ्रेश मिल्क विथ लैक्टोज शुगर्स और फ्यू बैक्टीरियाज। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होने स्टार्ट होते हैं, मल्टीप्लाइज होने स्टार्ट होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन बढ़ने से फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये एसिड प्रोडक्शन एक कर रहे हैं, जिस एसिड का नाम है लैक्टिक एसिड। इसी लैक्टिक एसिड के कारण इसका जो खट्टा खट्टापन है वो आ रहा है। द टेस्ट, सॉर टेस्ट इज ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड। ओके, so we can't have it, it will be damage to your system. So if such kind of milk you found in summer days, so don't consume it, try to discard it. Actually, we should not consume such milk which is kept at the room temperature and which turns into the sour in taste. So
This was the normal, what we can say, a day-to-day example, just to explain like what is the uh, chemic what is the, what we can say, how we can write this whole reaction in this manner. So this is the, see, C12 H22 O11, it's a lactose, then H2O is the water, and this is the lactic acid. So in the above we already studied, what we studied, this is the रिएक्टेंट, हमने पढ़ा ना ऊपर, ये क्या है, रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट कितने हो सकते हैं, या तो एक हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। ओके, और वो रिएक्टेंट क्या फॉर्म कर देंगे, वो फॉर्म कर देंगे एक प्रोडक्ट। क्या फॉर्म कर देंगे, एक प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। ओके, और ये प्रोडक्ट इस केस में क्या है, लैक्टिक एसिड। तो जो रिएक्टेंट है पहले वाले, लैक्टोस और H2O मतलब वाटर, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। ओके, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है, यही तो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे। इट कैन बी हैविंग अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये इसके एग्जांपल है। ये कुछ और भी सिमिलर काइंड ऑफ एग्जांपल्स है, वो भी तुम लिख सकती हो। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट, लोहे की अगर चीज को तुम क्या करोगे, मॉइस्चर में रख दोगे तो क्या फॉर्म हो जाता है, रस्ट, जंग लग जाती है। एक आयरन की रॉड है सपोज, तो उस पर अगर बाहर छोड़ दोगे तो उस पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाती है। ये भी एक एग्जांपल है किस चीज का, केमिकल रिएक्शन का। किस चीज का एग्जांपल ये सब मैं लिखा रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन इन डे टू डे लाइफ। ओके, फिर व्हेन अ फूड इज कुक्ड, खाना बनाते हैं, ओके, डाइजेस्टेड इन द बॉडी अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। तो फूड क्या होता है, रॉ रहता है, फिर हम उसको कुक करते हैं, फिर उसको बॉडी में जाता है, फिर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। सिमिलर प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, सांस लेने का, कंबशंस आर आल्सो केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो इसमें की पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, की पॉइंट नोट डाउन करने के लिए इसमें की पॉइंट्स ये है, इन ऑल दिस केसेस द ओरिजिनल सब्सटेंस, जो ओरिजिनल सब्सटेंस था वो चेंज में गया, और देयर कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस। पहले यहाँ पे अगर सपोज देखोगे, ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। ओके, और ये तुम्हारा रस्ट क्या है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। ओके, तो रिएक्टेंट से क्या निकल गया, प्रोडक्ट निकल गया। ओके, इन शॉर्ट यही है कि रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, जिनका जो कॉम्पोजिशंस है वो डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में लिखा है, विथ डिफरेंट कॉम्पोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज, इसी को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ओके, हमने एग्जांपल्स देखे। अब इस एग्जांपल्स में, ये जो एग्जांपल है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो अगेन जो हमने ऊपर पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट को फिर से लगाएंगे। हमने ऊपर अभी भी क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, कि ये क्या है, इस तरफ के जो लेफ्ट हैंड साइड है, LHS वाले, ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये क्या है, सब लोग एक साथ याद करो क्या था, ये है रिएक्टेंट। क्या है ये, रिएक्टेंट। और ये जो फॉर्म हो रहा है केमिक, ये अंडरगो जा रहा है किसी प्रोसेस में, और ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। ओके, और इसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, इसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। सो रिएक्टेंट कैन बी वन और मोर देन वन, इट कैन बी two. Okay, so magnesium and oxygen goes under a chemical process and form a new product which is called magnesium oxide. यार मैग्नीशियम जो अभी अभी ऊपर समझा है उसी चीज को यहाँ लिखा है, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स combines to form a new substance called magnesium oxide which is the product. Okay, so this was the introduction of our new chapter. It's an interesting chapter. I will try to explain each and every concept of this chapter in detailed manner. This was just to make you understand like what we are going to study, and in our day-to-day life, if we want to make a linking between the lab activities and day-to-day life, so this was just a linkage. We can link our day-to-day activity with our textual concepts.
it will be helpful for you to make understand the new concepts. Okay, so always try to understand the things in our surrounding, so it will be better for you to make you understand. Okay, so in next session we are going to study the upcoming topics of this chapter, like chapter 1, chemical reactions and equations. Okay, thanks for today. We will connect in the next session. Okay, bye everyone. Bye बच्चों.